तो आज के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रीवियसली तालिबान हैड रूल अफगानिस्तान फ्रॉम डैश अंटिल डैश. पहले तालिबान ने जब अफगानिस्तान पे रूल किया था तो कब से लेकर कब तक किया था. सो हेयर आर द ऑप्शंस. 1996 to 2001, 2001 to 2008, 1990 to 1996, Taliban never ruled in Afghanistan. So here the correct answer is option 1, 1996 to 2001. Okay, so now goes the next question, and the next question is, when is World Entrepreneurs Day celebrated? When is World Entrepreneurs Day celebrated? तो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे कब मनाया जाता है. सो आर द ऑप्शंस. 15 दिसंबर, 11 अगस्त, 21 अगस्त, 7 मार्च. सो द करेक्ट आंसर इज 21 अगस्त. एवरी ईयर अगस्त 21 इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे. हर साल 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे. So now next question, and here the next question is, who is the author of the book Address Book, a publishing memoir in the time of COVID? A publishing memoir in the time of COVID के author कौन थे. So here are the options. सुरभि चोपड़ा, रितु मेनन, श्वेता सभरवाल, रागिनी गुप्ता. So here the correct answer is option B. A book titled A Address Book, a publishing memoir in the time of COVID-19 has been written by Indian feminist writer and publisher Ritu Menon. Ritu Menon ने ये book लिखा है Address Book. So now next question, and the next question is, who has written the book titled Let's Go Time Traveling Again? Let's Go Time Traveling Again ये किसने लिखा है. So here are the options. मंगलम सिन्हा, गोपीनाथ रामशंकर, सुभद्रा सेन गुप्ता. So here the correct answer is option D, Subhadra Sen Gupta. Last book of author Subhadra Sen Gupta, who lost her life due to COVID-19 in May 2021, was released by Puffin Books, the children's imprint of Penguin Books. The book is titled Let's Go Time Traveling Again and has illustrations by Tapas Guha, a well-known illustrator for children. तपास गुहा जो कि चिल्ड्रन के लिए एक बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेटर है, उन्होंने इस बुक का इलस्ट्रेशन किया था. बुक का नाम है लेट्स गो टाइम ट्रैवलिंग अगेन, और ऑथर सुभद्रा सेन गुप्ता की ये लास्ट बुक थी. उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से मई 2021 में. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉमेडियन सीन लॉक हु पास्ड अवे हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री. कॉमेडियन सीन लॉक जिनकी डेथ हो गई है वो किस देश से थे. सो हियर आर द ऑप्शंस. ब्राज़ील, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Sean Locke, best known for starring in British comedy panel show 8 out of 10 Cats, has died. He was 58. Comedian Sean Locke, best known, जो कि British comedy panel के लिए ज़्यादातर जाने जाते थे, 8 out of 10 Cats की डेथ हो गई है जब वो 58 एज के थे. So now next question, and the next question is, O Chandrasekharan who passed away was related to which sport? O Chandrasekharan जिनकी डेथ हो गई है वो किस स्पोर्ट से थे. So here are the options. वॉलीबॉल, टेनिस, फुटबॉल, स्नूकर. So here the correct answer is option C. Okay, former Indian footballer O Chandrasekharan passed away in Kochi. He was 86 एज के थे वो जब उनकी डेथ हो गई. Okay, so now next question, and here the next question is, it is a national Labour and Employment Minister Bhupendra Yadav launched eShram portal. It is a national database on whom. लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, eShram पोर्टल. तो ये पोर्टल जो है ये किसके नेशनल डेटाबेस पे है. सो आर द ऑप्शंस. ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, SC वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ट्राइबल वर्कर्स. So here the correct answer is option C, and here the answer is option C. So government launched eShram portal, national database on unorganized workers, NDUW. Unveiling the logo for the eShram portal, Labour and Employment Minister Bhupendra Yadav said that the targeted identification of the unorganized workers was a much needed step. He said the portal will be the national database of national builders, the Shram yogis, and help take welfare schemes to their doorsteps. Okay, so now next question, and the next question is, which state government conferred the prestigious Sri Basava International Award on Sri Basavalaga Patadevaru, senior seer of Bhalki Hiramath. So here the options are Uttar Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Rajasthan. So the correct answer is option B, Karnataka. Karnataka government has elected Sri Basavaliga Patadevaru,
senior seer of Bhalki Hiremath for the prestigious Sri Basavan International Award. Minister for Canada and Culture V. Sunil Kumar will present the award at Ravindra Kalakshetra in Bangalore. Okay, so now next question. And the next question is, who is appointed as Joint Secretary in the Ministry of Cooperation? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन की जॉइंट सेक्रेटरी किसे बनाई गई है? सो आर द ऑप्शंस: अभय कुमार सिंह, राजीव पोरवाल, अमित दुबे, रविशंकर प्रसाद. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, Abhay Kumar Singh. Abhay Kumar Singh has been appointed as the Joint Secretary in the Ministry of Cooperation, which was recently formed with an aim to strengthen the cooperative movement in the country, according to a personal ministry order issued. So now next question, and the next question is, who was the India's flag bearer during the opening ceremony of Tokyo Paralympics 2020? Tokyo Paralympics 2020 के during इंडिया के फ्लैग बेयरर कौन थे? सो आर द ऑप्शंस: अमित मारियप्पन, रवि प्रसाद, थांगावेलु मारियप्पन, Tek Chand. So here the correct answer is option D, Tek Chand. Javelin thrower Tek Chand will be India's flag bearer during the opening ceremony of Tokyo Paralympics 2020, as Thangavelu Mariappan was quarantined after he came in close contact with COVID-19 positive person on the flight of Tokyo. Javelin thrower Tek Chand वो बने थे इंडिया के फ्लैग बेयरर 2020 ओलंपिक्स में, क्योंकि थांगावेलु मारियप्पन जो है उनको क्वारंटीन कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी पार्ट ऑफ एन NBA टाइटल विनिंग टीम? NBA टाइटल विनिंग टीम की पार्ट बनने वाले पहले इंडियन कौन है? सो आर द ऑप्शन: हरप्रीत सिंह, प्रिंसिपल सिंह, अनिल सिंह, गोविंद कुमार. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रिंसिपल सिंह. प्रिंसिपल सिंह बिकेम द फर्स्ट Indian to be a part of an NBA title winning team when his side Sacramento Kings clinched the 2021 NBA Summer League crown. The 6'9" forward made history by being the first Indian to be a part of championship roster at any level of NBA. Okay, so आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.